नागपुर में. She is advisor coordinator to Member Secretary, Engineering Council of India, New Delhi, and lot many institutes she is connected with. She is associated with Rotary Club in Nagpur, and she was president and now trustee over there. Also associated with many prestigious institutions in Nagpur and also all over in India. हमारे नागपुर की एक सक्सेसफुल लेडी एंटरप्रेन्योर, हम सभी जानना चाहेंगे उनकी जर्नी और उनका गाइडेंस. सो नाउ आई रिक्वेस्ट मिसेस मिनल डेहाड्राई टू टेक चार्ज एंड गाइड अस. Good morning and thank you, Sampark. I'm very glad to be here, and I can see many known faces amongst you, amongst the galaxy of the members sitting over here. And thank you, Medha Joshi ma'am, to call me, and the entire team of Sampark who has given me chance to come here and be with you and share my experiences with you. मेरी भाषा मातृभाषा मराठी है, तो मैं थोड़ा कुछ मराठी में बोलूँगी. मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो आई विल बी कंफर्टेबल समटाइम्स इन हिंदी, एंड आई कैन ऑल्सो कैरी आउट इन द वर्ल्ड लैंग्वेज इंग्लिश, तो थोड़ा उसमें भी बात करेंगे. सो आई विल बी स्पीकिंग इन ऑल द 3 लैंग्वेजेस व्हेन एंड वेयर आई फाइंड वर्ड्स इन विच एवर लैंग्वेज. ओके, या दैट इज बेटर बिकॉज ऐसे थोड़ा मुश्किल हो रहा है. Yeah, this is better. Okay, I was born on 15 July 1971, so I'm 52 years old now. I started my journey. I was a Somalwarian, तो मेरा पूरा education सोमलवार में हुआ है. I did my 11th 12th from Dhanapet Science College, and then I did my engineering in civil. So वहाँ पे भी मेरे को स्ट्रगल एंड चैलेंज था. 30 years बैक कोई सिविल इंजीनियरिंग में लड़कियां नहीं जाती थी. सो आई वॉज द ओनली गर्ल इन द एंटायर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डूइंग सिविल इंजीनियरिंग अमंग ऑल द मेन. एंड वो सब वहाँ यूपी से आए हुए बच्चे रहते थे, एंड इट वॉज हॉरिबल, बट आई टुक द चैलेंज एंड आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग. And I passed with flying colors. So that was the first